Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Today I am going to discuss semantics, some MCQs based on semantics, another branch of linguistics. You know that I have discussed linguistics, general linguistics, morphology, phonetics and phonology, and some MCQs from syntax. And today I will discuss semantics. I have almost covered linguistics. Then yesterday in my last video, I discussed general concepts of poetry. I have also discussed figurative language and some other aspects of English literature, history of English literature as well. So now very few things are left. तो जो इंग्लिश लेक्चरशिप की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मेरा जो पैकेज है, तैयारी का पैकेज है, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके साथ नए ग्रुप में दोबारा तैयारी स्टार्ट होगी. तो अब 14 सितंबर को आपका इंग्लिश लेक्चरशिप का टेस्ट है. तो आज के बाद अगर आप देखें तो यू हैव जस्ट 10 days. कीप ऑन वर्किंग, हार्ड वर्क की ज़रूरत है. अब आपको बड़ा स्मार्टली स्टडी करने की ज़रूरत है. प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें. तो वीडियोस देखने से यही फ़ायदा होगा आपको कि आपको सिलेक्टेड किस्म के एमसीक्यूज़ जो मैं समझता हूँ कि पेपर में आ सकते हैं, सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ आपके सामने रेडीमेड आप फॉर्म में आपको मिल रहे हैं. तो वीडियोस को देखें. और अगर आपने मेरे व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इसमें KPPSC टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है. पिछली तमाम वीडियोज़ में इसमें भी ऊपर आई कार्ड में आपको वीडियो नज़र आती हैं, मैं देता रहता हूँ, इन स्क्रीन पर आती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है. तो वहाँ जाके आप पिछली तमाम वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस सम MCQs बेस्ड ऑन semantics, another branch of linguistics, and you know that semantics is the study of meanings. Okay, let's get started. Number 1, semantics is the study of dash in language. I have already told you, semantics is the study of dash in language. The options are conceptual, associative, meaning and agent. The right option is very simple. Option C, semantics is the study of meaning in language. Number 2, dash meanings covers those basic essential components of meaning that are conveyed by the literal use of a word. I repeat, dash meanings cover the basic essential components of meanings that are covered by the literal use of a word. The options are conceptual, associative, meaning and agent. And the right option is conceptual. Option A, conceptual meaning covers those basic essential components of meaning that are covered by the literal use of a word. Next, dash meanings of the word may differ from one person to the next. Very important. Dash meanings of a word may differ from one person to the next. The options are conceptual meaning, associative meaning, meanings or agent. What sort of meanings of a word may differ from one person to another? The right option over here is option B, associative. Associative meanings of the word may differ from one person to the next. Next MCQ, one role is taken by the noun phrase as the entity that performs the action, technically known as, I repeat, one role is taken by the noun phrase as the entity that performs the action, technically known as. The options are conceptual, associative, meaning or agent. Semantics को आप वैसे जनरली स्टडी भी कर लें. व्हाट इज़ सेमांटिक्स और सेमांटिक्स में हम क्या चीज़ें देखते हैं, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, मीनिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप किस किस तरह कौन कौन सी मीनिंग्स की फॉर्म्स हैं, लिटरल मीनिंग्स कौन से हैं, एसोसिएटिव मीनिंग्स कौन से हैं, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कौन से, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, डिफरेंट जो मीनिंग्स की फॉर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी भी कर लें तो आपको ये
MCQs अटैम्प्ट करना आपके लिए ईजी होगा. अदरवाइज़ ये जो मैं MCQ डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सिमेंटिक्स में से अगर कोई MCQs आएगा तो माई गारंटी इनमें से कोई एक ज़रूर होगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट, agents and themes are the most common semantic dish. Agents and themes are the most common semantic dish. The options are themes, roles, meaning, agent. The right option is option B, roles. Agents and themes are the most common semantic roles, right? Next, two or more words with very closely related meanings are called synonyms, homonyms, antonyms, prototype. I think it's very simple. The right option is option A, it's synonym. Synonyms are two or more words having the same meanings. Next, two forms with opposite meanings are called synonyms, homonyms, antonym, prototype. Again, that's the opposite of synonym. It is antonym, option C. Next, when the meaning of one form is included in the meaning of another, the relationship is described as. When the meaning of one form is included in meaning of another, the relationship between these two is described as synonymy, homonymy, antonymy, or prototype. That is option B, hyponymy. When the meaning of one form is included in the meaning of another, the relationship is described as hyponymy. Next, the idea of the characteristic instance of a category is known as the idea of the characteristic instance of a category is known as the dash synonymy, hyponymy, antonymy, or prototype. That is option D, prototype. The idea of the characteristic instance, the very instance, the essence of anything, that is prototype. Okay, semantics is not so much difficult as compared to syntax. मॉर्फोलॉजी भी आप स्टडी करें, आपको आसानी से समझ आएगी. उस पर बेस MCQ से प्रैक्टिस करें, फिर सिमेंटिक्स को स्टडी करें, फिर MCQ से प्रैक्टिस करें. फोनेटिक्स फोनोलॉजी मैंने डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती. बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं. तो अब आज सिमेंटिक्स है और फिर इसके बाद इंशाल्लाह सिंटैक्स को भी डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा. मेरे लिए मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कन्फ्यूजिंग या मुश्किल लगती है जब मैं मास्टर्स कर रहा था लिंग्विस्टिक्स के अंदर, तो सिंटैक्स वो टेक्निकल है, बोर्डिंग भी है. नेक्स्ट MCQ, व्हेन टू और मोर डिफरेंट रिटन फॉर्म हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, दे आर डिस्क्राइब्ड एज in the example bear, B-A-R-E, bear, B-E-A-R, bear. When two or more different written forms have the same pronunciation, they are described as, the options are homonyms, collocation, polysemy, or homophones. When two or more words have the same pronunciation, they are described as option D, homophones. Next, dash means one form written or spoken. Word has two or more unrelated meanings. Dash means one form written or spoken. Word has two or more unrelated meanings. जब एक लफ्ज़ के दो या दो से ज़्यादा unrelated meanings होते हैं, that is called, options are homonyms, collocation, polysemy, or homophones. The right option is homonyms. Homonyms means one form written or spoken. Word has two or more unrelated meanings.
Next, Desh can be defined as one form written or spoken having multiple meanings that are related by extension. Desh can be defined as one form written or spoken having multiple meanings that are all related by extension. The options are homonyms, collocation, polysemy, and homophones. That is option C, polysemy. Polysemy, listen once more. Polysemy can be defined as one form written or spoken having multiple meanings, having different meanings, multiple meanings that are all related by extension. That is called polysemy. The next is, in recent years, collocation is the study of words which occur together, and their frequency of co-occurrences have received a lot more attention in Dash linguistics. Very interesting. In recent years, collocation is the study of words which occur together. Collocation is a word which are normally occur together. ऐसे दो वर्ड जो आमतौर पर साथ ही occur करते हैं. That is called collocation. Collocation is the study of words which occur together, and their frequency of co-occurrences has received a lot more attention in Dash linguistics, Corpus linguistics, collocation, polysemy, or homophones. That is, the right option is option A, it's Corpus linguistics. Next, a Dash is large collocation of text, spoken or written, typically stored as a database in a computer. A Dash is a large collocation of text, spoken or written, typically stored as a database in computer. The options are corpus, collocation, polysemy, or homophones. Again, the right option is option A, is corpus. These were a few very much important MCQs from semantics. Semantics is the study of what? Study of meanings in language. Different kinds of meanings, and sometimes polysemy and homophones, metonymy, different meanings. These are given in your paper. Just study once semantics. अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे लिखें, मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर लूँगा PDF फॉर्म या वर्ड फॉर्म में. इसको स्टडी करें, 4-5 पेजेस होंगे, स्टडी करें, उसके बाद दोबारा आप MCQs की प्रैक्टिस करें. तो बहुत कम दिन रह गए. नाउ प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम. आपकी तैयारी होगी आपकी प्रैक्टिस से. सिर्फ स्टडी करने से या रटे मारने से नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस करनी है. MCQs, जितने MCQs हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करें. टॉपिक वाइज MCQs देखें. मेरे इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में मैं टॉपिक वाइज बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, और जो मेरे साथ ग्रुप में लोग शामिल हैं उनको मैं मटेरियल भी सेंड करता हूँ. तो ज़ाहिर सी बात है, जो लोग ग्रुप में वो रजिस्टर्ड लोग हैं, उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की है, तो उनको मैं वो सारी चीज़ें, डिस्कशन, मटेरियल, MCQs, इन वीडियोज़, ये वीडियो सब के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर जो सिलेक्टेड मटेरियल होता है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो भी मैं सेंड करता हूँ. और मुझे उम्मीद है कि उनकी तैयारी ऑलमोस्ट 90% हो चुकी है. तो अब अगेन इस वीडियो में लास्ट में बताता हूँ, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकली जो लोग अप्लाई करेंगे वो 15 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवाएं. मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, सिटी का नाम मुझे भेजें. मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, और इंशाअल्लाह 15 सितंबर से सिस्टमेटिक बाकायदा तरीके से आपकी तैयारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयार हो जाएगी. उसमें आपके सेशंस होंगे, आपके MCQs होंगे, मटेरियल होगा, PDF फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में डिस्कशंस होंगी. इस सिस्टमेटिक तरीके से इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी. तो उसका जो SS का सिलेबस है वो थोड़ा सा लेक्चरशिप से डिफरेंट है, वहाँ थोड़ी चीज़ें इजाफी है. तो इन एडिशन टू लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर रिकवरी और लैंग्वेज ग्रामर, कुछ पेडागोजी और कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपकी जो BEd के बेस्ड होती हैं, जब टीचिंग के साथ हैं, वो करिकुलम के साथ हैं, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा. तो आज की इस वीडियो में जो ऑलमोस्ट 15 MCQs मैंने डिस्कस किए हैं सिमेंटिक्स पे, इनको 2-3 दफ़ा देखें, और इंशाअल्लाह आई गारंटी दैट सिमेंटिक्स में से कोई MCQs आएगा तो इनमें से ही होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर क्वालिटी एंड इफेक्टिव लर्निंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.